Hello children, good morning. Today we are going to start our exercise of chapter number 3. So all of you take out your maths book. I hope all of you learned very well this both table. सबने याद किया ना अच्छी तरह से ये दोनों टेबल्स? Okay. Now start. Open page number 87. First exercise. Write the Roman numerals for the given Hindu Arabic numerals. ठीक है, यहाँ नंबर्स दिए हुए हैं, उसको हमको रोमन नंबर में कन्वर्ट करना है. Listen carefully everybody. Expanded form is very important for you to write answer for Roman numbers. Roman numbers लिखने के लिए expanded form बहुत ही important है. ठीक है, चलो फर्स्ट एग्जाम्पल A75. तो 75 एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे लिखेंगे? 70 प्लस 5. Now let's go back to the table and see what is for 70 Roman number. Look here, 70 LXX. L means 50, X means 10. 10 plus 10, 20. That means 50 plus 20. एंड प्लस 5. 5 के लिए क्या है? V. दैट मीन्स 50 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 5. सो कीप इट दैट इन माइंड. वी विल राइट 50 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 5. दैट विल बी 75. L X X and V. Now next 54. 54 को एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे लिखेंगे? 50 प्लस 4. लेट्स गो बैक टू आवर टेबल. How we will write 50? Only L. Okay, L and plus 4. 4 that means 4. मैंने बोला था ना 4 and 9 कैसे लिखेंगे? माइनस करेंगे 4 and 9 में. लुक हियर, 4 IV. दैट मीन्स 5 minus 1. So we will write 50 plus 4. 50 means L and 4 means IV. Next see 18. 18, that means expanded form 10 plus 8. 10 means X and 8 means now go back to table. 8. 5 plus 3. 3 means triple I means 5 plus 3. Look here, 10 plus 5 plus 3. That means 8. 10 plus 8. X, V and triple I. Now D, 37. What is expanded form? 30 plus 7. 30 means 10 plus 10 plus 10. 10 means X. X, X, X. 30 हो गया plus 7. 7 means 5 plus 2. 5 means V and 2 means double I. That means 37 means X, 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 V, double I. Now E, 43. What is expanded form? 40 plus 3. 40. जैसे 4 और 9 को मैंने समझाया था माइनस करना है, वैसे एज इट इज 40 एंड 90 को भी माइनस करना है. 40 मीन्स 50 minus 10 and plus 3, 43.
50 means L and minus 10, that means x आगे लिखना है. XL 40 हो गया प्लस 3 means 3 टाइम I. XL and 3 टाइम I. Now all of you take out your maths notebook. Write today's date 24/6/21, chapter 3, Roman numbers, exercise 1. Now first example is 46. 46. So the expanded form is 40 plus 6. Expansion में लिखना है हमको 40 plus 6. Right here 40 plus 6. Now how we will write 40 in Roman letters? बोलो. Look at the table. 40. 40 means XL. 50 minus 10. XL. Right here XL. ये हो गया 40. Now plus 6. 6 means 5 plus 1. 5 means V and 1. 5 plus 1 हो गया 46. All of you always remember you both tables. बहुत ही important है. Next example 35. 35. So the expanded form is 30 plus 5. Right here 30 plus 5. So how we will write 30? 10 plus 10 plus 10. 10 means x. Right here 30, 10 plus 10 plus 10. 30 हो गया and plus 5. 5 का सिंबल क्या है? V. So 35 means x x x V. Now next 80. What is the expanded form? 80 50 plus 30. 50 plus 30. 50 means what is Roman number? Roman letter L. 50 means L. And plus 30. Plus 30 means 10 plus 10 plus 10. X x x. X x x. Okay. Now next D. 93. 93 means what is expanded form? 90 plus 3. 90. 90 means as it is 40. 40 में कैसे माइनस किया था? 4 9 40 4 9 जहां पे भी नंबर आता है वहां हमको माइनस करना है. ओके. 90. 90 means 100 minus 10. 100 का सिंबल क्या है? Look at the table. 100 means C. 90 means 100 minus C means आगे x लिखना है. 90 means x C.
and plus 3. Plus 3 means 3 ones. I. Yeah. XC triple I. Now next 72. What is expanded form? 70 plus 2. Now how we will write 70? 70 means 50 plus 20. Look at the table. 70. 50 plus 20. 50 means L plus 20 means double X. Now write here 50 means L and double X. हो गया 70. 50 plus 20. 70 हो गया plus 2. That means double I. Now next 23. What is expanded form? 20 plus 3. Very simple. 20 means double X. And 3 means triple I. 3 times I. Now next 65. What is expanded form? 60 plus 5. 60 means 50 plus 10. 60. 50 means what is symbol of 50? L. And plus 10. X. हो गया 60. And plus 5. What is the symbol of 5? V. हो गया LX V. Now last 14. 14. So expanded form is 10 plus 4. बहुत ही सिंपल है. So 10 is X and then 4 is again minus 5 minus 1. 5 means V. Minus 1 means आगे 1 लिखना है. I. Now next exercise second. Write the corresponding Roman numerals. जैसे फर्स्ट एक्सरसाइज में लिखा था एज इट इज वैसे ही हमको इसमें भी लिखना है रोमन नंबर. ओके. फर्स्ट 78. All of you use this margin for rough work. Okay. Now write here what is the expanded form? 78. That means 70 plus 8. Okay. 70 plus 8. 70 means how we will write 70? 70 in Roman letters. Now look at the table. 70, 50 plus 20. That means L and double X. 50 plus 20. Now 8. Look at the table back again. 8. 5 plus 3. 5 plus 3. So write here 5 plus 3. Okay. Now next 37. What is the expanded form? 30 plus 7. Right here 30 plus 7. Now what is the Roman number of 30? 10 plus 10 plus 10 means 3 times x. ये हो गया 30. Now 7. Look at the table. 5 plus 2. 5 plus 2. 5 means V and double I. V and double I. हो गया 37. Now next 34. What is the expanded form? 30 plus
4. 30 plus 4. 30 means 10 plus 10 plus 10. 30 and 4. 4 means 5 minus 1. Minus 1 means लार्जर नंबर के आगे स्मॉलर नंबर आएगा. I and V. 5 minus 1. Now next 49. What is the expanded form? Right here 40 plus 9. 4 और 9 आते ही माइनस होता है. 40. How we will write 40? Look at the table. 40. XL 50 minus 10. 50 minus 10. ये हो गया 40. Now 9. 9 means 10 minus 1. Look at the table. 9. 10 minus 1. 10 के आगे 1 लिखना है. 1 and 10. X L I X. Now next E 90. 90 means what expanded form में इसमें प्लस में नहीं आएगा, ये माइनस में आएगा. Right here 100 minus 10. 100 means C. Right here C minus 10 means X. Now 50. 50 means, look at the table. 50 means L. L. Very simple. Now next 21. What is the expanded form? 20 plus 1. 20 means 10 plus 10. X X. ये हो गया 20. Then 1 I. X X I. Now last 63. What is the expanded form? 60 plus 3. Now how we will write 60? Look at the table. 50 plus 10. 60. 50 plus 10. 50 means L. 10 means X. 50 plus 10. ये हो गया 60 plus 3. 3 time I. 1 plus 1 plus 1. सबको समझ में आ गया? दोनों टेबल सबको अच्छी तरह से याद करना है. ओके, बाय, टेक केयर.